Welcome to the Sunday edition of Market Month with a program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. The numbers to call us are 2331-4444, 2371-7106, 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज रविवार है और आज के दिन कारोबारी खबरों के साथ साथ हम आपसे सीधी बातचीत किया करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं म्यूचुअल फंड से संबंधित सवाल पूछने के लिए। आप हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। GST revenue collection touches all-time high of 1.68 lakh crore rupees in April. LIC IPO to open tomorrow for anchor investors, and India's pharma exports jump 103% in 8 years to hit the highest ever level of 1.83 lakh crore rupees in the last fiscal. देश में इस वर्ष अप्रैल में वस्तु और सेवा तक के उच्चतम स्तर 1,68,000 करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंचा। जीवन बीमा निगम का IPO कल एंकर निवेशकों के लिए खुलेगा और विगत 8 वर्षों में औषधि निर्यात में हुई 103% की वृद्धि। पिछले वित्त वर्ष में 1,83,000 करोड़ रुपए से अधिक का दवा निर्यात किया गया। ये है अब तक का सर्वोच्च स्तर। The gross goods and services tax GST revenue collection has touched an all-time high of around 1.68 lakh crore rupees in April 2022. The GST collection in April this year is 25,000 crore rupees more than the next highest collection of 1,42,095 crore rupees, which was in March 2022. That's last month. Of the total GST collection in April this year, Central Goods and Services Tax or CGST collection is 33,159 crore rupees. State Goods and Services Tax SGST is 41,793 crore rupees. Integrated Goods and Services Tax IGST is 81,939 crore and cess is 10,649 crore rupees. Finance Ministry said the revenues for the month of April 2022 are 20% higher than the GST revenues in the same month last year. During the month, revenues from import of goods was 30% higher and the revenues from domestic transactions was 17% higher than the revenues from these sources during the same month last year. The Finance Ministry mentioned that for the first time, gross GST collection has crossed 1.5 lakh crore rupees mark. Total number of e-way bills generated in the month of March 2022 was 7.7 crore, which is 13% higher than the 6.8 crore e-way bills generated in the month of February 2022, which reflects recovery of business activity at a faster pace. हम सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया आमंत्रित करना चाहेंगे धीरेन्द्र जी। जीएसटी संग्रह के जो ये आंकड़े हैं सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। 1.5 लाख करोड़ से अधिक का आंकड़ा पहली बार राजस्व के रूप में संग्रहित हुआ है इस मद में। क्या दर्शा रहा ये और हम क्या उम्मीद करें आने वाले दिनों में बढ़ते हुए इससे कि आने वाले दिनों में भी यही क्रम बना रहेगा? उम्मीद का तो पता नहीं, लेकिन ये तो बड़ा क्लियरली दर्शा रहा है कि हम जो सोच रहे थे कि इकोनॉमी में डिसेलरेशन, हम पूरी तरह से ये पैंडेमिक के बाद जिस तरह का रिवाइवल और जिस तरह से कंजम्पशन और में वृद्धि हुई और ये दर्शा रहा है और वो दिख भी रहा है। अगर हम देखें कि ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ये जो खबरें आमतौर पे आ रही, जो कि इस भीषण गर्मी के बावजूद भी ये जो नंबर आ रहे हैं ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है। इसके बावजूद कि अभी बड़ा ऑटोमोबाइल सेल और वो सब में वो वापस वो रुख नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि हमारा इकोनॉमी बहुत रफ्तार से पटरी पे आ गया है और जो हम सोच रहे थे कि काफी समय लग जाएगा आने में, वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। Let's remind the listeners that Dhirendra, our mutual fund expert, is live and will answer any questions that you have on mutual fund and related issues. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. If you're calling from outside Delhi or you're calling from a mobile phone, please add 011 before these numbers. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ कल एंकर निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि ये 4 मई से 9 मई तक आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। एलआईसी आईपीओ 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का प्राइस बैंड 902 रुपये से लेकर 949 रुपया प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में बोली लगा सकते हैं। एलआईसी ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपये प्रति शेयर की छूट दी है। पॉलिसी धारक श्रेणी में 60 रुपये प्रति शेयर की छूट मिल सकेगी। प्रत्येक शेयर का फ्लोर प्राइस उसकी फेस वैल्यू का 90.2 गुना होगा। इसी तरह प्रत्येक शेयर का कैप प्राइस उसकी फेस वैल्यू का 94.9 गुना होगा। सरकार एलआईसी में 22 करोड़ 13 लाख शेयर बाजार में उतारकर अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेच रही है। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर आ जुटे हैं दिल्ली से वरुण। वरुण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए। वरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना सवाल पूछें। लगता है हमारा संपर्क ठीक से स्थापित नहीं हो पा रहा है। धीरेन्द्र जी, हम बाजार का जो अभी माहौल है, उतार चढ़ाव का माहौल है, उसे ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में यदि कोई बिल्कुल नया व्यक्ति हो, निवेश करना चाहे, तो किस तरह उतर सकता है और कहां उसके लिए शुभ आरंभिक दौर के कह लें कि जो नए निवेशक हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस रूप में वो बाजार में प्रवेश करें? लोगों के लिए अब निवेश करना तो अनिवार्य है, और जिस तरह से ब्याज दरों में कमी आई है, बहुत सारे लोग दूसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि म्यूचुअल फंड में या बाजार में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा जितना ये सुविधाजनक हो गया, जितने आसानी से आप निवेश कर सकते हैं, तो लेकिन केवल आसानी से निवेश कर पाना, ये इस वजह से आपको आंख बंद करके निवेश नहीं करना चाहिए। किसी भी निवेशक को शुरुआत करनी चाहिए, भले ही आप भविष्य में शेयर्स में खुद लगाएंगे, कुछ खास शेयर्स में लगाएंगे, छोटी कंपनियों में लगाएंगे, लेकिन शुरुआत आपको हमेशा म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क आपका स्प्रेड हो पाता है डाइवर्सिफिकेशन से, आप और लंबे समय का पैसा ही लगाएं। और अगर ये 2-3 मुझे गाइडलाइन देना हो कि क्या शुरुआती निवेशक को करना चाहिए, तो अगर आपके पास 5 साल से कम का पैसा है, तभी आप किसी इक्विटी या किसी बैलेंस फंड में पैसा लगाएं। उससे कम का पैसा आप डेट फंड में लगाएं। इक्विटी में कभी भी एक साथ पैसा न लगाएं, और शुरुआत करें एक कंजर्वेटिव अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से, जिसमें कि 20-25% आपका फिक्स्ड इनकम होता है। बाजार की गिरावट से बाजार में जब भारी गिरावट होती है, तो ये फंड, ऐसे फंड धाराशायी नहीं होते हैं, जो कि शुरुआत में निवेशकों का विश्वास बनाने के लिए ये बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, थैंक यू। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या डिफरेंस है सर? और दूसरा, आईसीसी का क्या अपॉर्चुनिटी फंड कुछ आया है ऐसा न्यूज में, तो क्या है अपॉर्चुनिटी फंड? फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को पूरी आजादी होती है कि वो कहीं भी लगा ले। छोटी बड़ी मिड साइज कंपनी में कुछ भी एलोकेशन हो सकता है। और ये जो मल्टी कैप फंड हैं, इनमें सेबी का डेफिनेशन ये कहता है कि कम से कम 25% पैसा आपका लार्ज कैप में, 25%, 1/4 पैसा कम से कम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा होना चाहिए, और बाकी 25% फंड मैनेजर आजाद है कहीं लगाने के लिए। तो इसका फायदा ये होता है कि कम से कम, क्योंकि जब ये जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड हैं, जब ये बहुत बड़े हो जा रहे हैं, तो इनका ये आमतौर पे अधिकतर पैसा 10,000 करोड़ से ज्यादा बड़े फंड में, अधिकतर पैसा लार्ज कैप और मिड कैप में ही लगा रहता है। स्मॉल कैप की भागीदारी कम हो जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप में लगाना, छोटे छोटे बहुत सारे पोजीशन बिल्ड करना इन फंड्स के लिए मुश्किल होता है। मल्टी कैप में ये अनिवार्य है कम से कम 25% का होना, तो ये ज्यादा डाइवर्स, बड़ा होने के बावजूद भी रहता है। The other question he had was about the ICICI, I think the Housing Opportunities Fund. हाँ, ये हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड, ये एक नया फंड है
और इस तरह के किसी भी थीमेटिक, ये फंड ये कह रहा है कि हाउसिंग में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इन कंपनियों को खासा फायदा होगा। और मेरी आमतौर पर सलाह होती है कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इस वजह से आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अगर आपका बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, इसको बारीकी से देखिए। ये काफी लगे हुए निवेशकों के लिए ये कोई विकल्प हो सकता है, लेकिन आम निवेशक को इस तरह के सेक्टोरल या थीमेटिक फंड से दूर रहना चाहिए। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर वरुण जी आ चुके हैं एक बार फिर से। वरुण जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। वरुण, आप हमारे साथ लाइन पर हैं। I think probably because of the heat wave, Varun is not really not able to make a connection. यानी ये इनका सवाल जो पूछना चाह रहे थे वो हमें जानकारी मिल रही है कि ये एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं और डेट फंड में 5-6 वर्षों के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो कौन सा सुविधाजनक इनके लिए होगा, कौन सा सुगम रहेगा? डेट फंड में पैसा, अगर आप डेट फंड रिटायर्ड लोगों के लिए डेट फंड आपके लिए सप्लीमेंट्री इनकम का जरिया हो सकता है। आपकी शुरुआत, अगर आपकी निर्भरता होगी अपने निवेश के आमदनी पे, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जिसमें आप अधिकतम 15 लाख रुपए लगा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री जय वंदना योजना है, जिसमें कि आप 10 लाख रुपए लगा सकते हैं और उसमें भी आपको गारंटी रिटर्न मिलता है। तीसरा विकल्प है पोस्ट ऑफिस का MIP, लेकिन इन तीनों में मिला करके अधिकतम पैसा करीब 40 लाख रुपए लग सकता है। उसके बाद स्थिति बनती है म्यूचुअल फंड की, और यहाँ डेट फंड आपको काफी सुरक्षित तरीके से पैसा दे सकता है। लेकिन जरूर आपको जरा ये भापना चाहिए कि अगर आप सारा अपना रिटर्न जो है, जो फिक्स्ड इनकम से मिलने वाला रिटर्न है, अगर आप वो कंज्यूम कर लेंगे तो आपका कैपिटल बराबर रहेगा और 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको समस्या होगी। तो कितना भाग आपका इक्विटी में लगना चाहिए, किस तरह से लगना चाहिए, या आपकी इनकम की निर्भरता इस निवेश से ही पूरी होनी है, तो इसके लिए एक बारीक प्लानिंग की जरूरत होगी। जरूर किसी सलाहकार से संपर्क करें। Murali from Chennai is online with us. Murali, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Murali, you're live with us. You can ask your question. Hello. Yeah, Murali, go ahead. You can ask your question. Yeah. Dhirendra, this is regarding the floater interest bonds, that is the mutual fund, because there is a recommendation to go in for the floater interest mutual funds. What are the prospects of this fund, Dhirendra? Thank you. Okay, these funds, that so far they have behaved almost like, let me first explain what are floating rate funds. These funds invest in bonds, which, most bonds are, they provide you a predefined rate of interest. Floating rate bonds are structured in such a manner that as interest rates change, the yield or the return from these funds, the interest payment, also changes. So tomorrow, if interest rate goes up, then a long-term bond will suffer quite a bit, simply because you are likely to earn, keep earning lower interest rate till the bond expires, till its maturity. In this case, these funds actually the interest rate gets aligned. So these funds are also very low. If interest rates go up, they will also not be hurt badly, because there is no long-term commitment of earning lower rate if it gets revised upward. So they turn out to be more stable. They are also unlikely to hurt an investor. They are also likely to enhance your return if interest rates go up. दिल्ली से हमारे साथ हैं वरुण। वरुण जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। Varun, we can hear you. Go ahead. हेलो। Yeah, Varun, please ask your question. अच्छा, धीरेंद्र जी और टीम को मेरा नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि जैसे हमें शेयर में जो कंपनी की तरफ से जो भी होल्डिंग रहता है उसका डिविडेंड मिलता है, तो जैसे म्यूचुअल फंड में जो है, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी को जो शेयर का डिविडेंड मिलता है, तो क्या वो अपने इन्वेस्टर को देती है? जी हाँ, म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड को जो भी डिविडेंड मिलता है वो सब कुछ उस दिन के NAV में रिफ्लेक्ट होता है।
एक तो जब और एनएवी के बढ़ने के 3 कारण है। एक तो कि जो दाम बढ़ता है या घटता है, दूसरा कि कोई डिविडेंड की आमदनी होती है, तीसरा कोई ब्याज की आमदनी होती है। और जब भी तो वो जो डिविडेंड है वो म्यूचुअल फंड कंपनी जब वो आपके एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है। श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। भारत के औषधि निर्यात में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक 103% की वृद्धि हुई है। ये वर्ष 2013-14 में 90,415 करोड़ रुपए के आसपास था, जबकि वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1,83,422 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। औषधि क्षेत्र में निर्यात का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। निर्यात में 8 वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर की एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया का औषधि केंद्र बन गया है। वैश्विक व्यापार व्यवधानों और कोविड महामारी की दवाओं की मांग में गिरावट के बाद भी वर्ष 2021-22 में औषधि निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई है। Our next caller is Ashish from Mumbai. Ashish, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Ashish, you're live with us. You can ask your question. Hello. Yeah, go ahead, ask your question. Yeah, I just wanted to ask Mr. Dhirendra about this debt mutual fund which invests in bonds. It is usually said when interest rate goes up, the bond rate goes down. What is the ratio behind this, and what is the meaning of bond yield? We always heard about this bond yield. So can you explain in detail what is bond yield? Bond yield, simply put, when a bond is issued, it carries a coupon, say 9% or 10%. And with passage of time, if interest rates change, the bond prices change to adjust with and bond prices change quite arithmetically to align with present interest rates. So if today's interest rates or, today a similar bond with a residual maturity of 5 years or 6 years or whatever, has 7%. So a 9% yielding bond, the price will adjust so that the current yield becomes, 6% or somewhat aligned with the current yield, depending on the quality as well. So, so the bond yield is not necessarily the yield at the outset. A bond might have a coupon of 9%, but today the price is adjusted to a level, and what will be the interest? The interest as a percentage of today's purchase price in the secondary market is the bond yield. And what is the relationship between the decline in the value of a bond when interest rate goes up? It entirely depends on two things. One is what is the scale of interest rate movement, assuming that if interest rate goes up by 1%. And so different maturities will have a different impact on bonds of different maturity. Assuming that a bond is going to mature in another 3 months, there won't be much of a difference. But if a bond is going to mature in, has a residual life of another 5 years, it will go down, because for next 5 years you will keep earning lower return, lower interest rates, while the interest rate is going up. If the bond is 15-year maturity or 20 years, then those bond prices will actually crumble quite substantially. Dhirendra, a caller we couldn't connect with, but before disconnection, he had told us, this is Satya from Delhi, who wanted to know that he's 30 years old and he wants to start 3 SIPs of 3,000 rupees each for a period of 3 to 5 years. So he wants you to suggest funds. If he's a taxpayer, if he's likely to pay taxes, and investing
will get him the tax break, then he should start with the tax saving fund and use it to the hill. Tax save is money earned, and it will also be it is a good kind of fund to start with, simply because when you're locked in for 3 years, you end up, having a better experience with equity funds. So for that, you can choose one of the good equity tax saving funds. Beyond that, if I have to choose 2 or 3 funds, I would suggest that, you should just consider flexi cap fund, something like, active flexi cap or Mirai asset focused fund, or, Kotak equity opportunity, or Invesco Contra. So, these are possible funds, but there are quite a few funds, in this category. This is quite a mainstream category, and one should always be, doing SIP. आइए चलें खजुराहो से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछें। लगता है तकनीकी कोई बाधा है, जिसके चलते जितेंद्र जी भी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। A question that a lot of people are asking, in fact there are two. The first one is stock specific, so you could probably even skip that, but there is this upcoming IPO which is coming on the 4th, although it's starting for anchor investors tomorrow. That is LIC, which is a 21,000 crore IPO. So a lot of our callers are asking up, is this one that we should invest in? So that's one question. And the other is the upcoming Akshaya Tritiya. A lot of people are asking about gold investments and what percentage of a normal healthy portfolio should gold investments be? Okay, I hold very strong views about gold, but let me first, I'm not going to give suggestion on whether you should invest in LIC or not. And one should always remember that equity investment is subject to all kind of market risk and even the behavioral risk. But let me just put forth, some advantages of LIC and some disadvantages of LIC. LIC is a government-owned company, and government-owned companies generally, we have come to know of late that government is struggling. We have seen that a service-oriented company, BSNL or Air India, we have seen that they end up being, because government does not run these companies as with a clear focus of enhancing or maximizing shareholders' value. It has multiple objectives, and those objectives are met, which is not necessarily very shareholders friendly. Then but let me just list a set of advantages of LIC. This disadvantage, which I say that it is government owned, is also a great advantage, because the core product of an insurance company is trust. And being a government company, LIC has the scale of trust, or absolute trust of investors, simply because it is government owned. And about the valuation or the pricing, government is selling a very small part of it. It has to keep selling in future, and that is why it is unlikely to price it in a manner that it will not. If it is not going to be a rewarding experience for investors, future investment will be shut down. Then comes that the LIC was a monopoly till about 20 years back, and even now it is the dominant player. With over 2/3 of the market. And so there are advantages. It's the biggest asset owner, biggest distribution, and this legacy business which it already has, and all life insurance contracts are long term. So even if LIC keeps losing market share, which it will, simply because it was a monopoly, but despite losing market share, LIC is still growing quite handsomely. So with that in mind, I think LIC will remain a very rewarding business over the next 10-15 years for shareholders. Then comes, LIC is so dominant that it can actually enhance shareholders' value just by, when it comes to crunch, it can actually derive much more value than whatever be the market value of its assets, at least equity assets. And then IPO itself will be a big turning point in the life of the company, that it will help its greater accountability, modernize, because so far, LIC's products are also, quite traditional. That is the dominant part of its business. So these are the pluses. When it comes to, disadvantages, I would say that the legacy is a problem.
it's an old-fashioned business structure, and the new players which are tiny players, they don't have the legacy. They will actually set the business rules, and LIC will have to play with that. And the LIC with its legacy will have it will be quite challenging for LIC to be maneuverable, to be able to match them in the marketplace. We seem to have reconnected with Jitendra from Khajuraho. Jitendra, welcome to Market Mantra. Please put your question. जी नमस्ते सर, दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है कि जो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि जो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आईपीओ में भी इन्वेस्ट करते हैं क्या सर? थैंक यू. म्यूचुअल फंड को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, और रेगुलेट ही नहीं करती है, उनको बिजनेस में आने के लिए एक म्यूचुअल फंड के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर है कि म्यूचुअल फंड का एक स्पॉन्सर होना चाहिए. एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको मैनेज करती है, जिसको कि मैनेजमेंट फी मिलता है, और इन्वेस्टर के सारे एसेट्स एक ट्रस्टी कंपनी में होता है या एक ट्रस्ट मैनेज करता है. और आपका दूसरा प्रश्न कि म्यूचुअल फंड आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं. The other question that I had asked earlier was about the gold investments, and you said yes, about the gold. Yes, it's Akshaya Tritiya, and people will consider gold. But there is gold. People have this great belief that gold goes up, and it does. But one should compare it with other competing alternatives. That how much has your money gone up? I was recently doing a comparison of gold vis-a-vis other alternatives, and or the market in general. And if somebody would have invested in gold in 1981, when the price of 1 tola, which is 10 grams, was 1,800 rupees. So this looks nice at today's price of 52,000 to over 52,000. It has gone up by 29 times. So it looks handsome, 29 times in these 40 years, from 1,800 to 52,000. But look at Sensex. In 1981, the Sensex was at 173, and it's at 58,569. It has gone up by 338 times. So this is 40 years, multiple. If somebody would have invested in 1991, the price of gold was 3,466 rupees. It has gone up by 15 times today. Compare that with, Sensex. It has gone up from 1,168 in 1991 to today's level, and that is 50 times. Gold has been rewarding, and there is a reason why everybody, trusts gold. Modern financial systems are 50-year, 100-year-old. Gold has existed for thousands of years. For poor people, there's the only way you actually hold a valuable asset which is handy, portable. But if you are looking at it as an investment, look somewhere else. If you are looking at a store of value which will come in the bad times, go ahead and buy gold. It is a handy store of value, and keep it notional. Don't consider it as an investment. जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से धीरेन्द्र जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. धन्यवाद आपका. Thank you, Dhirendra. Before we close, a reminder of the headlines. GST revenue collection touches all-time high of 1.68 lakh crore rupees in April. LIC IPO to open tomorrow for anchor investors, and India's pharma exports jump 103% in 8 years to hit the highest ever level of 1.83 lakh crore rupees in the last fiscal. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.